ओके, वन मोर थिंग, बताइएगा कि स्क्रीन आपको शो हो रही है मेरी? स्क्रीन शो हो रही है? Oh, yeah, we can see your screen. ओके ओके ओके, परफेक्ट. Okay, hello everyone. Hope you all are doing well. First of all, thank you so much for joining the session, for joining this concise and beautiful session about Founders Hub Intro. So, as I said, concise session. So, आज के जो सेशन है वो काफ़ी कंसाइज और काफ़ी प्यारा सा डिज़ाइन हुआ है. हम तो डिज़ाइन इसको नहीं कर रहे, बट माइक्रोसॉफ्ट ने ही हमें प्रोवाइड की थी एक टेम्पलेट कि आप लोगों को ब्रीफ कर पाएँ अबाउट फाउंडर्स ऑफ इंट्रो. सो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो सेशन है वो काफ़ी छोटा-सा है, तो उसका एजेंडा भी उतना ही छोटा है. लाइक हम सबसे पहले आपको फाउंडर्स हब का ओवरव्यू देंगे, फिर उसके बाद हमारे पास वीडियो भी है फाउंडर्स हब की कि आप उसको कैसे साइन अप कर सकते हैं, आप उसमें कैसे लॉगिन कर सकते हैं. एंड मारूफ फिर आपको उसका प्रोडक्ट डेमो देंगी. लाइक आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किया जाएगा. फिर उसके बाद आप लोगों को दिखेगा कि आप इसमें इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं. फिर एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लेंगे. ओके, तो आगे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल meet our host and co-host. My name is Abdullah bin Aftab and I'm the Beta MLSA, and I'm also pursuing software engineering from Naval University, Islamabad. And meet our amazing co-host, Mahrukh Khan. She's an open source contributor and she's also a machine learning enthusiast. And ये एक साल से बीटा MLSA and hopefully she'll get gold ambassador by this year. Okay, so let's start the session. So नाम से जिस तरह हमें पता लग रहा है कि फाउंडर्स हब के बारे में मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को पहले बता दूं कि फाउंडर्स हब एक्चुअली है क्या. और अक्सर ऐसा होता है कि एज अ स्टूडेंट हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं. लाइक हम चाय पी रहे हो, हम क्लास में दोस्तों के साथ बात नहीं कर रहे हो, हम सो के अभी उठे हो, लाइक अभी हमने उठे हो और हमने मुंह धोया हो, तो हमें एक जबरदस्त सा एक स्टार्टअप का आइडिया आ जाता है यार कि अगर हमने ये बना लिया तो बस फिर तो हम नेक्स्ट बिल गेट्स हैं या हम फिर नेक्स्ट इलॉन मस्क हैं. और ये काफी अच्छा मोमेंट होता है हमारे लिए जब भी हमें कोई न्यू आइडिया आता है. बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि उसको आगे परस्यू करने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होती. परस्यू करने के लिए लाइक एज वी नो, आज आजकल एआई के बगैर प्रोडक्ट्स नहीं बन रही. जो भी सॉफ्टवेयर है वो एआई के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है. और आज के लोगों की परसेप्शन भी चेंज हो चुके हैं कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में एआई नहीं होगा तो वो उसको एज अ सीरियस सॉफ्टवेयर लेते ही नहीं है, उसको न्यू इनोवेशन मानते ही नहीं है. तो और एज अ डेवलपर्स हमें पता है कि एआई को इंटीग्रेट करना एक सिर्फ मुश्किल नहीं है, इट्स आल्सो वेरी चैलेंजिंग. सो माइक्रोसॉफ्ट हमें यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फाउंडर्स हब, जिसमें हमारी ये सारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती हैं. और बेसिक नेसेसिटीज तो वर्ड ठीक नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसमें इससे भी ज्यादा मतलब माइक्रोसॉफ्ट हमें सब कुछ प्रोवाइड कर देता है. लाइक हमें एज्योर की फुल एक्सेस दे देता है विद देयर क्रेडिट्स, और क्रेडिट्स भी कोई कम नहीं होते. लाइक दे विल गिव यू, हम आगे जाके देखेंगे, दे विल गिव यू लाइक 1500 यूएसडी क्रेडिट्स टू 150K. एंड और एक स्टार्टअप के लिए ये बहुत होता है. लाइक आप इसमें अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स डिप्लॉय कर सकते हैं, आप अपनी वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, आप अपनी एपीआई की को डिप्लॉय कर सकते हैं. लाइक जस्ट डू वट एवर यू वांट. आप अपने, अब ये आप पर है कि आपने जो सोचा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. आगे जाके देखेंगे कि इस पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप इसमें एलिजिबल है कि नहीं. ये सब चीज़ें इस सेशन में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे. और ट्रस्ट मी, आप ये सेशन देखने के बाद भूल जाएंगे कि यार अगर हमें कोई आइडिया आता भी है तो वो वेस्ट हो जाएगा. जस्ट आपको कोई भी आइडिया आता है उसको आप लिखें और जस्ट डू अप्लाई इन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट. ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता चुका हूँ पहले, यहाँ से भी आपको नजर आ रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टर फाउंडर हब इज अ प्लेटफॉर्म enables all founders to build a future including student founders.
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते, तो यू कांट मेक अ स्टार्टअप। हमारे बहुत ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, लाइक हर कंट्री में इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। वो स्टूडेंट्स को लेते हैं सीरियस, बट जब तक उनके पास कोई माइंड ब्लोइंग, कोई बिल्कुल ही छप्पड़ पार आइडिया नहीं होता, राइट? सो बट फाउंडर साहब इस चीज़ को भी बिल्कुल डिनाई करता है कि आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आपका कितना एक्सपीरियंस है फील्ड में, उनको बस ये देखना है कि आपके पास आइडिया है कि नहीं, ओके? सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने सीनियर ईयर में लाइक 6 सेमेस्टर में है, 7th सेमेस्टर में है, 8th सेमेस्टर में है, आपने जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप वो आइडिया भी पिच कर सकते हैं फाउंडर साहब में टू गेट योर एज़्योर क्रेडिट्स एंड यू स्टार्ट वर्क ऑन इट और आपको एक प्योर क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को एक बहुत अच्छा स्केल कर सकते हैं। ओके, सो फाउंडर्स हब आपको एक्सेलरेट करता है ग्रोथ करने में। एक एक तो चीज़ मैंने आपको बताई कि आप लोगों को ये पूरा क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं कि आपने डिप्लॉय करनी है चीज़ें, आपको क्रेडिट चाहिए वो देते हैं, आपकी एपीआई को मैनेज कर देते हैं, मशीन लर्निंग, एआई के मॉडल्स डिप्लॉय कर लेते हैं। लाइक आपको एज़्योर ओपन एआई भी अ, फ्री दिया जाता है इसमें, फ्री नहीं, उसके जो क्रेडिट्स होते हैं और वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आप इज़िली कवर कर सकते हैं। सिर्फ़ ये नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफ़ेशनल्स होते हैं लाइक एमवीपीज़, वो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म में आते हैं और आपको गाइड भी कर सकते हैं गाइड भी करते हैं कि आप एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट हमें नहीं पता होता यार कि हम बना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, पर हमें नहीं पता उसकी मार्केट फिट क्या है, हाउ टू गेन कस्टमर, हम उससे मोनेटाइज़ कैसे कर सकते हैं अपने चैनल्स को, हम उससे कमा कैसे सकते हैं, राइट? एट द एंड ऑफ द डे हम जब तक हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वो कुछ अर्न नहीं करता, तो वो एक बेकार सॉफ्टवेयर है दुनिया की नज़र में। लाइक हम तो उससे काफ़ी सैटिस्फाइड हो सकते हैं कि हाँ, हमने ये बना लिया, बट जब तक उस पे कोई कस्टमर्स नहीं आएँगे वो अट्रैक्शन गेन नहीं करता, राइट? तो वो दुनिया के लिए तो एक जस्ट अ सॉफ्टवेयर है, उनको हमारी मेहनत से कोई लेना-देना नहीं है। तो येस, एज़ अ स्टूडेंट हमें नहीं पता होता यार कि हमने किस तरह ग्रो कराना है सॉफ्टवेयर को। तो दिस प्लेटफ़ॉर्म विल हेल्प अस टू ग्रो और आपको ग्रो करने में चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइस हो, चाहे वो मेंटरशिप हो, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। Okay, so the last point is Founder Hub is open to all with different benefits depending on how much progress you made. Let's say आपको सिर्फ अभी आइडिया है, आपको माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर्स हब बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप उसको प्रोटोटाइप करें, आप उसका इनिशियल कोड लिखें या जहाँ आप उसका HTML और CSS में उसका थोड़ा सा कोड लिख दें, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपने जस्ट अपना आइडिया लेना है, नो मैटर वो किसी भी स्टेज पर हो, आपने यहाँ पर आकर पिच कर देना है। Okay, so as you can see, there are multiple levels in this program. तो हम एक-एक करके लेवल्स को देखते हैं। ओके, सो लेवल 1 का नाम है आइडिएट। इस लेवल में ये बिल्कुल बेसिक लेवल होता है जब आप अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो आइडिया है, उसको एक रियल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है, तो यू आर ऑन द लेवल 1। ओके, इससे पहले कोई लेवल नहीं है और आप इससे अगले लेवल पे नहीं जा सकते अगर आप आइडिएट वाले को पूरा नहीं करते। तो इसमें आपको 1000 एज़्योर क्रेडिट्स मिल जाते हैं और ये आपके मंथली अपडेट होते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जॉइन किया है एज़्योर लाइक 25th को, तो 20th मार्च को आपके 1000 क्रेडिट्स दोबारा डाल दिए जाएँगे आपके एज़्योर अकाउंट में। ओके, सो आइडिएट लेवल इस पे एंटर करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास एक आइडिया होनी चाहिए, ठीक है? और उसका आपको प्रोटोटाइप वहाँ पे दिखाना है। प्रोटोटाइप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको कोड करें या आप उसका कोई टेम्पलेट बनाएँ। आप सिंपल एक यूआई यूएक्स उसका बना सकते हैं। फिग्मा में सिंपल सी प्रोटोटाइपिंग उससे कर सकते हैं जो कि एक बेसिक चीज़ बता रहा हो कि हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ओके? और बहुत क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत क्लियर होनी चाहिए कि फ्यूचर में वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और हम उसको ऐसे बनाएँगे। तो प्रोटोटाइप बहुत चीज़ों से बन जाते हैं। हमारे पास नो कोड टूल्स भी होते हैं, हमारे पास यूआई यूएक्स डिज़ाइन्स के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो आप प्रोटोटाइप कहीं से भी बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट लेवल व्हिच इज़ लेवल 2 द डेवलपमेंट फेज़। आप जब ये लेवल पूरा कर लेते हैं,
और आप इसके सारे क्रेडिट्स में आई थिंक 60 टू 50% इसके क्रेडिट्स यूज़ कर लेते हैं। तो एक थ्रेशोल्ड होता है। आप जब वो पूरा कर लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट जो फाउंडर्स ऐप है, वो आपको ऑटोमैटिकली जंप कर देता है लेवल 2 पे। ओके, सो लेवल 2 पे आपको 5000 और 5K एज़्योर क्रेडिट्स मिलते हैं। और इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए आपके अपने सॉल्यूशन के लिए, और आपने एक एमवीपी प्रोडक्ट बना दिया। नाउ जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं एमवीपी क्या होता है। इट्स अ मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। ओके, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये एक प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं होती, बट ये प्रोडक्ट इस हद तक डिजाइन हो गई होती है, इस हद तक कोड हो गई होती है कि आपके आइडिया को फुल फ्लेज डिलीवर कर रहा हो। लाइक आपने किसी को भी दिखाना है यार कि आप इस पे काम कर रहे हैं, तो आपकी ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब सॉफ्टवेयर ही है, ये आपका सॉफ्टवेयर इजीली बता रहा हो यार कि ये इस प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही करेगा। इस पे मैं डिजाइन की बात नहीं कर रहा, इस पे फंक्शनैलिटी की बात कर रहा हूँ। इसमें कोर फंक्शनैलिटी भी नहीं होती, इसमें बिल्कुल प्रोटोटाइपिंग फंक्शनैलिटी भी नहीं होती। एक बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी सा प्रोडक्ट होता है ये, सॉफ्टवेयर कह लें, प्रोडक्ट कह लें। अपने अ, जिसको भी आप बताना चाहते हैं, तो उसको आप शो कराना चाहते हैं, उसको भी आप उसको शो कराने के लिए आपको ये एमवीपी बनाना पड़ता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। चैट जीपीटी है। हमें पता है कि उस पे कोई भी प्रॉम्प्ट डालो तो आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिल जाते हैं, बहुत ही कंसाइज वे में मिल जाते हैं आंसर। बट हमने अगर एक एमवीपी बनाना होता चैट जीपीटी का, तो हम क्या करते? हम एक नॉर्मल सा इंटरफेस लेते, इतना प्यारा इंटरफेस भी ना बनाते, उसमें एक चैट का ऑप्शन डालते, और हम कुछ भी हम एक डमी सी वो करते हैं, डमी सा प्रॉम्प्ट लिखते, और पीछे हम डमी रिस्पॉन्स ऐड कर देते कि अगर जो भी रिस्पॉन्स आएगा, तो उसके बिहाफ पर, और जो भी प्रॉम्प्ट आएगा उसके बिहाफ पर ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, राइट? तो इस तरह हमारी जो एमवीपी है, हम उसको शोकेस करा सकते हैं। और जब हम ये एमवीपी बना लेंगे, और हमें जब 5000 क्रेडिट्स मिल जाएंगे, और हम 5000 को भी आधा यूज कर लेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर्स हब हमें ऑटोमेटिकली लेवल 3 पर चले जाएगा। और इसका नाम है ग्रो। इसमें क्या होता है कि एमवीपी आपने बना लिया, अब आहिस्ता-आहिस्ता आप उस पर काम करते हैं। इसमें टाइम लिमिट क्यों नहीं होती? आप इज़िली अपने सॉफ्टवेयर पे काम करें। कोई इसमें बाउंड नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट आपको कि आपने इतना करना है, इतने टाइम पे इतना करना है, नहीं। और माइक्रोसॉफ्ट भी इस बात को काफ़ी वैल्यू करता है कि स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता। डेफिनिटली वी हैव मिड्स, वी हैव सेशंस, वी हैव फाइनल्स, तो इतना हमारे पास फ्री टाइम नहीं होता। तो हमारे पास एक काफ़ी बड़ा प्ले एरिया होता है कि हम आराम-आराम से अपनी प्रोडक्ट को अच्छी तरह डेवलप कर सकें। ओके, तो एमवीपी जो ये ग्रो लेवल है, लेवल 3, एमवीपी को जब हम और रिफाइन कर देते हैं, इस पे न्यू फीचर्स डालते हैं, और हम ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं कि ये कस्टमर ना गेन कर सकता हो। लाइक इसमें कैपेबिलिटी हो कि ये कस्टमर्स को गेन करे, तो दिस लेवल इज फॉर यू। मतलब आपने एमवीपी लिया, उसको बनाया और इतना बना लिया कि वो कस्टमर्स की ना अट्रैक्शन गेन कर रहा। तो आप इस लेवल में होते हैं, और इस लेवल में आपको 25,000, व्हिच इज़ अ ह्यूज अमाउंट मैन। और 25,000 डॉलर के आपको क्रेडिट में एज़्योर क्रेडिट्स मिलते हैं, और ये मिल जाएँ तो लाइक ईद होगी आपकी, मतलब इसके अलावा इसके आगे कोई मुश्किल नहीं होती। इसके अलावा बस आपकी प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। आपके पास डिप्लॉय करने के सारे फीचर्स होते हैं, लाइक आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए ना, आप ये 25,000 एज़्योर क्रेडिट्स मोर देन इनफ है। ओके, अब हमने एमवीपी बना ली थी लेवल 2 में। हमने अब अपनी प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स ऐड कर दिए थे कस्टमर्स की अट्रैक्शन के लिए। नाउ अगर अब हम ये अपने जो एज़्योर क्रेडिट्स हैं, ये 50% यूज़ कर लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर्स हमें ऑटोमैटिकली लेवल 4 पे डाल देता है, जिसमें हमें पीएस से कनेक्ट करवाता है, डिफरेंट एमवीपी डिफरेंट जो हैं प्रोफेशनल्स हैं, उनसे कनेक्ट करवाता है। और ये जो लेवल है, इसमें हमारे प्रोडक्ट का बहुत ही, कहते हैं कि एक ना, कंक्लूजन निकाला जाता है यार कि इस प्रोडक्ट का मार्केट फिट क्या है, और ये सेल्स के लिए रेडी भी है कि नहीं है, और सेल्स को एक्सेलरेट किस तरह करना है। तो ये सब लेवल 4 में देखा जाता है। तो जैसे कि हमने देखा लेवल 1, 2, 3 इज़ फॉर मेकिंग योर प्रोडक्ट, और जो लेवल 4 होता है उसमें एक तो आपको 150 के एज़्योर क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, और आपने अपनी सेल्स को एक्सेलरेट किस तरह करना है।
और आपका सारा इसमें फोकस एक्सेलरेट पे होता है, अपनी मतलब सारा फोकस आपके सेल्स पे होता है कि उनको एक्सेलरेट किस तरह करना है, राइट? तो इस तरह से कुछ लेवल्स हैं जो आपको फाउंडर्स हब में मिल जाते हैं। ओके, सो अगर थोड़ा-सा और डीपर जाएँ कि हमें फाउंडर्स हब में क्या-क्या मिलता है, तो कुछ एआई टूल्स हैं और ये स्लाइड्स भी आपको बाद में मिल जाएँगी, मैं इनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको कि आप लोग भी इसको तफ़सील से पढ़ लीजिएगा। बट मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ कि हमें पे सबसे जो आजकल जो ट्रेंडिंग पे हैं एआई टूल्स, हमें वो मिल जाते हैं इसमें, इस सॉरी माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर्स हब के प्लेटफ़ॉर्म में। अपने इनोवेशन को एक्सेलरेट करने के लिए जो हमारा लास्ट गोल है 150 के एज़्योर क्रेडिट्स, वो किसी भी फाउंडर को मिल जाएँगे। बस उनकी थ्रेशोल्ड ये होता है कि आपने एक-एक स्टेप को पूरा करना है, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, स्टेप बाय स्टेप। फिर जब आप आते हैं इसमें तो आपको एआई टूल्स कौन-कौन से मिलते हैं देखते हैं। ओपन एआई की सर्विसेज़ हैं, डेली है, कोडेक्स है, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं और ये सारे एआई टूल्स जिससे आप अपनी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपका चाहते हैं कि यार मैं एक से ज़्यादा चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करूँ और इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस बनाऊँ, तो जैसा कि हमें पता है कि हम जब अपने इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो हम अपने 2500 भी हमारे पास मोर देन इनफ होते हैं एज़्योर क्रेडिट्स, उस पे भी कर सकते हैं। ओके, सिर्फ एआई टूल्स ही नहीं, हमें पता है कि एक बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए होती, हमें पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस भी चाहिए होती है। वी नो हाउ टू मेक प्रोडक्ट, बट हमें ये नहीं पता होता कि हाउ टू एक्सेलरेट द प्रोडक्ट और हाउ टू गेन कस्टमर्स अट्रैक्शन, हाउ टू गेन यूजर्स फ्रॉम इट, राइट? तो हमें पर्सनल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है अपने स्टार्टअप जर्नी में। हो तो हम अपने स्टार्टअप बना रहे हैं, हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, हमें पूरा बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उस चीज़ की गाइडेंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट हमें कनेक्ट करवाता है प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि हमें गाइडेंस देते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो, चाहे वो हमारी एक्सेलरेशन के लिए हो। और इसमें वन ऑन वन सेशन भी हमें इजीली मिल जाता है। कोई भी बैरियर नहीं होता, हमें एक मीटिंग बुक करानी होती है और हमें पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए अवेलेबल होते हैं हमेशा। सो मैं पहले जैसे मैं बता चुका हूँ कि बिज़नेस ग्रोथ, हमें सिर्फ़ प्रोडक्ट नहीं बनाना, हमें बिज़नेस बनाना है। तो उसकी ज़ाहिर-सी बात है, एज़ अ स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ़ इंजीनियरिंग की डिग्री होती है या कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती है, तो हमें बिज़नेस का नहीं पता होता। हमें नहीं पता है कि उसका मार्केट फिट किस तरह देखना है, उसकी सेल्स को एक्सेलरेट किस तरह करना है, राइट? तो ये भी हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है यार कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो किस तरह करेंगे। हाउ यू कैन ग्रो योर बिज़नेस बाय बिल्डिंग क्विकली, शिपिंग फास्टर एंड कनेक्टिंग टू कस्टमर्स मोर एफिशिएंटली। और इसमें आपको प्रीमियम लिंक्डइन प्रोवाइड किया जाता है, गिटहब का वो अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप एक अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन आप होल्ड कर सकते हो। मोंगोडीबी जो कि एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और बहुत कुछ होते हैं इसमें। जो भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ अ, जितने भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स एसोसिएट हैं, वो सब आपको उनकी एक्सेस दी जाती है। ओके, सो अब मेरे पास एक वीडियो है, मैं उसको प्ले करूँगा और मारूख, कैन यू प्लीज़ टेल मी कि आवाज़ आ रही है कि नहीं? 3 मिनट्स की वीडियो है। आई होप आप इसको देखेंगे। बट एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ये भी आपको मिल जाएगी और ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएँगी। सो ये तो किसी का कोई भी पार्ट मिस होता है तो हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी। where you can begin the application process by clicking Sign Up. You can click where you can begin the application process by clicking Sign Up. जस्ट लेट मी नो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है वीडियो की? Yes. ओके, ओके, परफेक्ट। You can click here to review eligibility criteria before you start your application and browse frequently asked questions. And if you don't have a LinkedIn account, you'll need to create one before you begin the application process. When you're ready to apply, enter your LinkedIn credentials and click Sign In. Once your LinkedIn account is authenticated, you will be taken directly to our simple 4-step application process. It takes less than 10 minutes to complete and allows us to get to know you and understand the current stage of your startup, which is crucial to providing you the right benefits and resources.
Step 1 of the application is Introduce. This is where you'll ensure we have the best email address on file for all communications related to your Founders Hub account. You'll also provide some details about your background that explains why you are uniquely suited to lead your startup. Step 2 is Explain. This is where you'll provide a name and description of your project or startup. The more you share, the better we'll understand the vision for your software-based product or service. If you have a website, enter the URL here. The third step is Elaborate. This section will help us understand where you are right now in your startup journey. Let us know which development stage best describes your project by selecting one of these icons. If you're not sure, you can click here and we'll explain each stage in detail for you. Then select your funding stage and let us know about any partners you are working with, Microsoft affiliated or otherwise. If you don't see a partner in the drop-down menu, you can list them here. Next, we ask you to provide an accessible link to a product demo or idea explanation video. If you need help creating a demo video, click here and we'll walk you through it. If you have any other public-facing links that might give more insight into your project or startup, there's a space here to provide those as well. These can help validate funding, partners, or customers too. The last application step is Finalize. This step helps us understand how far along you are in the business formation process. Business is incorporated and provide the legal address that matches your incorporation so we can verify it. If your business is not incorporated yet, you can provide your business or home address. The last step is to provide the email address of the Microsoft employee who referred you. If you weren't referred by an employee, you can leave this blank. When you're finished filling out your application, click here and you will be redirected to a confirmation page. You will also receive an email to verify that we have received your application. It typically takes no longer than 5 to 7 business days to review. If for any reason you no longer wish to apply, you can click here to delete your application. You can also export it for your records by clicking here. While your application is being reviewed, you can click here to see our frequently asked questions or submit a support ticket for additional help. And that is how to apply for Microsoft for Startups Founders Hub. So perfect. I think video is over. Okay, so हमने देख लिया कि अप्लाई करना कितना आसान है माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर्स हब में। हार्डली कोई 4 से 5 स्टेप है। मेनली तो इसमें साइन अप फॉर्म जैसा ही है। तो बस बात ये है कि आप लोगों के पास एक क्लियरली प्रॉब्लम होना चाहिए और उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका मेथड होना चाहिए। उसकी वीडियो आपने देखा है, उसकी वेबसाइट है तो उसका लिंक। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इतना, कोई ज़्यादा प्रेशराइज़ स्टेटमेंट्स नहीं है यहाँ पे। इवन कि आपको कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिखनी नहीं पड़ती। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ईज़िली अप्लाई ऑन माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर्स हब। ओके, अब हमने काफ़ी कुछ सुन लिया कि ये मिलता है हमें, ऐसे-ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, बट डेफ़िनेटली यहाँ पर सिलेक्शन के गाइडलाइंस भी हैं कुछ, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा। इस तरह नहीं है कि हर कोई जॉइन कर सकता है। तो हम एक-एक करके देखते हैं। ओके, सो आपका जो स्टार्टअप है, the startup must be engaged in the development of a software-based product or service that will be a core part of your current intended business. This software must be owned, not licensed from another party. यानी कि जो आपका जो स्टार्टअप है ना, वो एक प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए और एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो एक प्रॉपर बिजनेस बना सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होनी चाहिए वो। और ये सॉफ्टवेयर है वो आपका अपना ओन होना चाहिए, मतलब ये किसी और कंपनी का नहीं होना चाहिए। राइट, ओके, सो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10,000 से ज़्यादा एज्योर क्रेडिट्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पहले नहीं मिले होने चाहिए। लाइक माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लाइक एक एमएलएसए भी है बट उसमें इतने ज़्यादा क्रेडिट्स आपको नहीं मिलते। बट और भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको 10,000 से ज़्यादा एज्योर क्रेडिट्स मिल जाते हैं। अगर आपने वो लिए हुए हैं तो आप इस पे प्रोग्राम पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो आपका जो आप जहाँ पर अपना स्टार्टअप सोच रहे हैं बनाने के, लाइक वी आर इन पाकिस्तान राइट नाउ, राइट? कुछ यूजर्स इंडिया से हैं, कुछ बांग्लादेश से हैं, कुछ नेपाल से हैं। तो और जहाँ-जहाँ अज़्योर का
जो जो एरिया ज़रूर कवर करता है और आपका स्टार्टअप वहाँ पर है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड लकीली पाकिस्तान इसमें है। और ये स्टार्टअप हैज़ नॉट गॉन थ्रू सीरीज़ डी और लेटर फंडिंग राउंड, और ये एक फंडिंग राउंड होते हैं, इसकी डेप्थ मुझे भी इतनी नहीं पता, बट ये ऐसा होता है कि सीरीज़ ए में कुछ आपको फंड मिलता है इन्वेस्टर की तरफ से, सीरीज़ बी होती है, सीरीज़ सी होती है, सीरीज़ डी होती है, राइट? तो सीरीज़ डी लाइक एक अच्छी खासी आपको अगर अमाउंट मिल जाए, तो डेफ़िनेटली एज़ अ स्टूडेंट हमें हमारे आइडियाज़ पे इतनी अच्छी अमाउंट नहीं मिली होती। तो अगर आपको सीरीज़ डी फंडिंग मिली हुई है या इसके आगे के फंड्स मिले हुए हैं, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, जो आपका जो स्टार्टअप है, वो एक प्राइवेटली हेल्ड होना चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं होनी चाहिए। और सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि योर स्टार्टअप मस्ट बी फॉर अ प्रॉफिट बिज़नेस। लाइक ये एक एनजीओज़ के लिए नहीं होना चाहिए, कोई नॉन प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं होना चाहिए, राइट? और आपका जो एक लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि योर स्टार्टअप इज़ नॉट एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ़ एक पर्सनल ब्लॉग नहीं होना चाहिए। लाइक आपको एक प्रॉपर एआई प्रोडक्ट का सॉल्यूशन बनाना है, और ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा अपना सॉफ्टवेयर एआई पे ही कोड करना है। आप एक नॉर्मल सी भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। कोई अम, ऐसा टूल बना सकते हैं, कोई बिज़नेस टूल बना सकते हैं जिसमें एआई इंटीग्रेट हो, एआई के फीचर हो, आप वो भी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई थिंक वी आर गुड टू गो। हमने देख लिया है कि अप्लाई कैसे करना है, हमने देख लिया है कि इसके प्रीरेक्विज़िट्स क्या हैं, हमने देख लिया है कि हमें इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। और अब हम देखेंगे यार कि इस प्रोग्राम्स के अंदर जितना हम डीप जाते हैं, मतलब अगर हमें ये मिल जाता है तो इसका इंटरफ़ेस हमें कैसा मिलेगा? सुनने में तो ये बहुत बड़ी चीज़ लगती है, बट ट्रस्ट मी, इसका जो इंटरफ़ेस है वो उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो नाउ Mahrukh will show you the hands-on experience. So, yes, Mahrukh, over to you. Thank you, Abdullah. So I'm going to share my screen now and I'm going to discuss before going to the website. I would love to discuss the level criteria of the Founders Hub perks that we are getting. So, as Abdullah has mentioned about the levels that you get and the appropriate perks and the benefits you get by the Founders Hub, the credits of Azure and OpenAI credits, API keys for ChatGPT 4, etc. So we have to have some documents and some guidelines. As prior mentioned, having a clear idea, having a LinkedIn profile, a incorporated or legal entity is required, as well as a website and some partner affiliation. All of these should be like completely satisfied to be achieving level 4, which is scale. But to get to the level 1, all you need is just a clear idea, a concept you may see, and a LinkedIn profile. I believe every good professional student and even a person in the career, all of them have a LinkedIn profile. So all you need now is a simple solution to a problem. You may look around your environment and you may see any issue that you could basically use some Microsoft technology to solve the problem. And then later on, to get to level 2, which is to get more credits, like 5K USD worth of Azure credits, you have to have some sort of legal entity now. And then to basically get that, if you go to the bottom column, you will see that you needed an activated Azure registration. So these are actually the tasks on the last 5 rows you are expected to complete by using the Founders Hub website. I'm going to share that and you will see through the demo more in what I mean by this. And then in the level 3, you have to have a website. You can make a basic static website like using github.io to host it, and you can host it for free even. So that would be quite an easy task if you may see fit. And then lastly, for the level 4, you must have some sort of partners or stakeholders in your Founders Hub startup idea. And then all of the latter 5 rows that you must have utilized the 50% of the credits and have a domain that is verified and having a demo video, and then of course having some team members, then you will be able to be in the level 4, which is the maximum benefit you can get for the Azure Startups Founders Hub. So then we are going to see what is basically the whole interface of when you basically log in to the website and once you're onboarded or selected into the Founders Hub.
So you can see this is a demo account Microsoft has provided us. It is a screenshot of their level 2. They're at level 2 right now, and there's some criteria on the bottom that they have to fulfill. So you can see there's some check boxes that they have actually completed those things, but they have yet to provide a demo video, and they have yet to consume the 50% Azure credit limit. So at level 1, you get around 1000 USD worth of credit in Azure. So it takes quite a lot of time to use it. But if you are using, you can say, like, if I'm going to use the highest GPU in a virtual machine, I'm pretty much going to smoothly consume all of that credit within like a week or so. So that is what the whole UI and the benefits you are able to see that you will achieve when you unlock the level. Then there's some technical support. Having a mentor and personally being a mentor in the peer mentorship program in the Microsoft Learn Student Ambassadors community, it is quite important to have someone who is actually guiding you to the right step and how you should be able to take things accordingly. So having a mentor that Azure provides, they are technically supporting you, they are there for you to specifically aid to your query or any issue that you may be facing. They can even help you in fast tracking your ideas, making viable products, and even they can upskill you on some right Azure learned technologies. And then lastly, this is basically the QR code where you may scan it to go to the Founders Hub website and sign up. So let's go to the fun part. So let's go to the website. Okay, so this is basically, let's go to the website first. This is the Microsoft for Startups uh, website. You may see that uh, they're writing some advertisement. They're telling you what perks you get to achieve. And all of this is free of cost. It doesn't hurt for you as students to take some time out and register for it because they are there to facilitate you. There's nothing that is going out of your pocket to be able to sign up for this. So you can use all of the latest AI innovations to basically unlock big solutions for your problem. And so on and so forth. There are quite a few partnerships. Not only you get perks from the Azure and Microsoft technologies, there are also third-party applications that you are able to actually utilize as well. And that is basically more on how other people and other co-founders and CEOs of the third-party companies that I mentioned have mentioned their quotes and their testimonials. So let's go back to my startups hub page. So this is my UI when I log in. So you can see that I have actually logged in. This is my email and this is my profile picture. So I have a startup with my friend. It's called Interactive Speech Therapist, which is the title you see on the left hand side. What we have done is we have actually made a product that is basically solving the stuttering speech. Uh, if you would recall the video that Abdullah played for you, it was showing the whole registration process, how you have to show your idea. You can send a product demo video. You have to add some development stage metrics, if it's developed or what it is. You have to tell some funding. Are you getting any funding or right now? What is the industry you are targeting? And even what is the business model? So you can see what we have filled out specifically to our startup, and it is actually a team members. You can say founders hub project. So I'm doing this with my other team members. So my project, Interactive Speech Therapist, it is basically helping people who have some speech problems. You know, some people who are born with some issues in speaking right. You know, they have some stuttering, they have some prolonging in their phonetics, and they have some issues pronouncing some letters or, you know, some words, right? So what we want is we are utilizing their Azure AI technologies to create a, you can say, a e-therapist application so we can help them. So this is a B2C model, meaning business to consumer. So we are directly going to the consumer and the users basically. And our categories are childcare software, AI, healthcare. Now, I'm going to go back to the front page and basically the first home screen that I get. You can see that I can utilize a notification of how many tasks I have yet to do.
So I'm in Levy or in level 2 right now, which means we have used 50% of our 1000 USD Azure credits. So that is how we are just in the level 2 right now. Now in level 2, we are yet to actually achieve all of the tasks. So you can see here, we have yet to verify our domain and update our business email. Now, this you have to use the allocated Azure credits. So keep your focus on the word allocated. Allocated meaning we are refreshed and we are continuously being provided the credits again at the start of each month based on the level we are at. So we have to keep utilizing it and we have to keep a good consumption of it. Now, you can see how you can explore the Azure AI Studio. You can talk to experts. There are advisors you can get paired on for the one-on-one interaction. And then, of course, there are some new and access tools you can get some developer access to. So they're not even in the market, but you can, experiment with it, play around with it. So going on to the benefits tab, GitHub, needless to say, it is the one of the industry standard things you should be knowing, and you should be able to work on your projects and make a bundle of repositories on. You can have some teamwork based work there. You can have 20 seats of the enterprise model of GitHub. So if you are using a personal student based GitHub account, you are, for example, if you are doing CI/CD implementation, you have some action jobs and workflows. You are not allowed to do cron jobs for like maximum 1000 minutes per month. With GitHub Enterprise, you can have those workflows work for around, you can say, 20,000 minutes per month, which is quite a exponential, amount. You can keep your systems, your solutions running for the users to use. And then moving on to all the other benefits we can get. There's other third-party softwares like Bubble, Close, and we have Azure OpenAI, we have Azure AI Studio, we have Azure that is themselves. So you can see that we have redeemed some of these benefits as well. And they are yet to redeem all the other ones like Dynamics, LinkedIn Sales Navigator, GitHub Enterprise too. So you can see how you can get Microsoft 365 Business Premium when you were a student at this stage, and you can use it for your basically solving your solution for your startup. And how this is priceless, because this is a total of around 100, like actually 1.5 million USD worth of benefits you can get for free. You just have to sign up, and you just have to then go through with the levels, work on your solution, redeem some credits, utilize those credits, and so on and so forth. Power Automate, you can utilize that. You can do payment integration if you are making e-commerce app with the Stripe payments. And then we have Soup funding to help having some stakeholder funding. The partner affiliation that I mentioned, that actually can come in handy with this benefit we can do. And of course, many other like Visual Studio Code, Visual Studio Enterprise. Now, these are actually not only the benefits we are going to get. You can see on the filter tab, there's also an option for new, popular. So if we hover on the new one, there are actually new benefits coming every day. Like next week, we might be able to get access to another benefit, like something quite beneficial for us. So that is how you can actually keep up with the latest market trends by being in the Microsoft for Startups Founders Hub program. Now, for guidance, which is the mentorship call, which you need and which you should need, everyone needs mentorship. Whichever life or path of life you are from, you always need someone to help guide you, keep you in check. So, why not let Azure do that for you? And the technical people that have been assigned to do that for you. So, you can request a support ticket if you have any issue, if your portal is not making the right resource, etc. You can get paired with some expert networks, and you can get in touch with advisors and such. So these are the experts. If you can see the top three coming right now: Haritha, Wukasan, Gary. There are endless people reaching out to help you. You can even filter which technology area you need. Like, I need AI. Okay, so my business enterprise is B2C, business to consumer. My country region is, let's go to Pakistan, right? So right now, there's no expert in Pakistan.
no problem. We are international people, you know, so we're gonna be open-minded because you can get help from anywhere. So that is all. You know, you can reset it, you can experiment and tinker around with it. There are people from all over the world that are here to help you, and you can reach out to them with just a simple click. So how amazing is that? You know, you can even connect with them on LinkedIn. So that's amazing. But the journey does not stop here. You know, nobody in Microsoft programs is expecting you to be an expert. You know, when you are being chosen to be an ambassador or chosen to register for the startups founders hub, you know, students are being targeted. There's no such professional or any, you know, industry guy or industry person that is being targeted in the demographic to apply here. Students are being targeted because we do not expect experts to go, because you know they already have their companies and you know they're in the corporate, they have those business licenses. They want students to be part of this because we are the future. You know, students are in the AI generation. We are the future, right? So you can actually learn more by being part of this program. You know, some Azure fundamentals, you know, clear your AG 900 exam, your certifications, get them in check. You can do that by learning with the right resources they have actually curated for you. You know, if you don't know how to do fundraising, if you need some guidance, you know, you can just go to their resources and they're going to guide you one on one in a module, and how you can actually work and how you can get the investment and how you can do some uh you know specification of what kind of investor you actually need. So that is quite an extensive, you know, resource and guidance that actually the Startups Founders Hub gives you. So I believe that is quite everything I can show from my side. So if anyone has any questions, me and Abdullah would love to take them. So this is now the question answer session. So anyone, we can allow the mics if Abdullah permits. Otherwise, you may please write your questions in the chat. Thank you so much, Mahrukh. Thank you so much for the detailed discussion on it. So yeah, we have a question from MD Rahad Ibn Sattar. So yes, mic is open now. Rahad, you can speak. Hello. Mic. Yeah, can you hear me? Yes, yes. Okay, thanks for the opportunity. Well, I'm an MLSA from Bangladesh. Well, I can't speak Hindi that much well, but I will try. So basically, भाई मैं अच्छे से बात करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. So first thing is, I got this opportunity to be in Founders Hub. Basically, we participated in Imagine Cup, so we got the opportunity to be there. But I'm facing a problem right now. Oh, sorry. Is it okay if I speak in English or just? Yes, yes, you can. You can. both combine करके बोलता हूँ. So Sure, sure. basically, okay. So basically, I'm facing a problem right now with credit card because right now in Bangladesh, I'm a student, so it's really hard to get a credit card because we need credit card to activate my Azure account. I mean, founders have restricted us not to use MSLA resources on the founders hub. I mean, that was the instruction for Imagine Cup. So I needed another Azure account to activate those 100 words, 100 USD for the first time. So, भाई question simple है, मेरा पास credit card नहीं है. So, is there any way that I can easily solve this problem? Oh, Mahrukh, would you like to say something on it? Yeah, sure. You know, if you have some team members, if they don't have credit card, but if they're just doing is they want to do a security check. They're not gonna charge the credit card. You know that very well. I would say, Actually, I tried with dual currency debit card. Even that was rejected. So I just
mailed to the support team of MLSA, and even I mailed it on Imagine Cup's support mail, but couldn't have enough response. I mean, how did you verify or activate your Azure account to get first $100? I mean, do you have credit cards right now? And are you a student? Yes, I have a credit card and I am a student for 3 months. Okay, that means that's not a debit card, right? It's credit card. Right, I right. mean, okay, it's really hard to get a credit card right now. I mean, dual currency credit card is really hard to get as a student. So Yeah, you're right. It was not easy, but I was quite desperate because I needed this for the verification and getting the credits. So I had to really push my case and get the clearance. I don't really use it. I just need it for the verification. yeah. Yeah. So is there any way that I can skip this part and activate my Azure? I really think you should really reach out to the experts as well, because I don't think anything that I would say is gonna be like immediately solving the solution. I really would recommend reaching out to the SA coordinator we have in the MLSA teams. They're gonna reply in 3 to 4 business days at max. So I really think they can give you another perspective on this. Yeah, that's true. I did actually, I mean, take them and on the teams and even mail them also. But okay, let's see. I will do it again. And okay, and another question is, if I want to use my tickets, I mean, expert tickets for this issue, will it be wise? Or I don't think so. That will be wise. What's your I've perspective? Personally, I wouldn't recommend it because it's like you have to deal with the subject matter, because you have a technical issue based with the registration, right? It's not a technology issue, if you know what I mean. It's like it's not a business challenge that you're facing, but you may reach out to other people, who have a startups founders account, and you can maybe they can help you in that as well if that seems fit. Hmm, yeah, yeah, that may do. So thank you guys for the cooperation. You're welcome. All right. I think there any more questions? Like, oh, Afnan, you may speak, Afnan. Uh, I Yes, have Afnan, please. allowed. Yeah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Walaikum assalam. First of all, amazing session, Abdullah and Mahrukh. And my question is, how does Microsoft for Startup is different from other startup support programs in the industry? Like, could you highlight some key points? Yes, definitely. So I have actually done an internship with a startup that was actually in a national incubation center called NIC. These are government initiatives in my country, Pakistan, that they help kickstart your startup, and they're gonna give you some advisors to help you with it. What I have actually felt is the difference between them and with the Startups Founders Hub is, first of all, everything is usually in person in those incubation centers, and here it's mainly online. You don't work in a Microsoft headquarters, etc. You can do anything at the comfort of your home. Secondly, I would say that the perks that we are getting, like even LinkedIn Premium, for example, or getting GitHub Enterprise, these are not even provided. When I was working there as a ML engineer, I kind of needed some credits at the time. I was working on AWS, so I was not able to get the credits. They had an option to give us credits, but they really had you can say they were not providing everyone there. There was a quota of like maximum 5 startups out of 30. So you can say I was not really satisfied at that time. If I had known about this program at that time, I would have definitely
applied and then gotten my credits, then I fully shifted to Azure, and then I'm a wholehearted Azure fan right now. So all these benefits, and the expert network is quite vast. The expert networks in those startups is and can be a bit limited as compared to this one. It's more international, you can say. Many other perspectives, many people with the plethora of learning, and they're specifically there to actually facilitate you. I reached out to some people during my time there at the NIC. They were quite busy, they didn't really reach back to me. And I was, quite stuck sometimes. So I hope that answers your question. Yeah, okay. That's all. Thank you. You're welcome. Okay, so we have something in the chat. You may mark your attendance. If uh, MD Rahat, your mic is allowed. You may speak. Okay, so I just forgot one of the questions. So, is there any community for specifically for founders of? I mean, whoever are in the founders hub, I mean, they can chit chat something if they faces any problem. I don't know actually if there any community for this or not. If Uh, there's so, then I would love to join. Yeah, in the MLSA teams, there's community and community hub, right? So if you go to the community hub, there is a channel there for the startups founders hub. So I saw it once, and I forgot about it then. But I believe there must be one, or as Okay, well we'll just as, go through it then. You said on the teams, right? yeah. Okay, thank you. Welcome. I think we are good to go, right? All right, so you may conclude the session, Abdullah.